So what is the meaning of Python web application? What do you mean by that? Like web framework? Framework in the sense what? It provides this much of facilities. Like it is fully loaded, like it is quite secure, it is scalable. In short, if you have like more than 10,000 users or more than 50,000 users, it will manage at the server side. Okay, we have not to write down code for that. and different companies, organization, government sectors uses this. Okay, so this much of facilities are there, and security in the sense like जो famous hacking tools है like SQL injection, cross-site scripting, और like click hijacking और click jacking. Okay, ये कोई भी चीज उस पे applicable नहीं है. In short, उन्होंने पहले से वो secure करके रखा हुआ है. You have to just active that particular thing. Okay, so जो boilerplate task है, जो boilerplate task है यहाँ पे वो automatically वो करके दे रहा है. That's that. And now, how to start with the Django? So what you have to do, you have to just open the command prompt. But Python must be like installed in your system. So just check करिए Python लिख के आप check करिएगा आपके पास कौन सा version installed है. Okay, so what I did मैंने command prompt start किया and just write on Python. So जो भी version यहाँ पे installed है वो मुझे show हो गया. So आप check कर लीजिए आपके system में Python installed है कि नहीं. Otherwise, firstly you have to install the Python. After that, for the Django, you have to just write down pip install Django. So it will install Django. In this system, it's not installed. Okay, so it will just start collecting or start installing or start downloading Django from its website. So now after the installation, first thing we have to create that is actually a project. And after that, we have to create an application. So now what is the difference between project and application? What is the difference between project and application? So project will have actually configuration file plus lots of applications to create a website. Okay, like let I just say मुझे actually एक college का website create करना है. So in that college website, I have two actually different websites. First one is faculty website. Second one is actually student website, admin website, and let I just consider accountant. Okay, so मेरे पास actually चार अलग-अलग website है. Home page is similar. ठीक है, सबको एक ही जगह login करना है. Login करने के बाद उनको different user मुझे different websites पे उसको navigate करना है. ओके, और लेट मी जस्ट से कि मेरे पास लाइक फैकल्टी, स्टूडेंट, अकाउंटेंट के लिए सेम था बट एडमिन के लिए डिफरेंट था. सो एडमिन एक्चुअली सभी चीजें इंसर्ट कर सकता है. ओके, एडमिन सब कुछ मतलब मैनेज कर सकता है. एंड दिस आर द यूजर्स एक्चुअली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स आई हैव. सो नाउ एंड इन सभी के बीच में एक ही डेटाबेस होगा. ये चारों वेबसाइट, 5 वेबसाइट, 10 वेबसाइट जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, उन सबके लिए एक ही डेटाबेस होगा. सो वी नीड अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल. सो इन सब के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इट विल बी कॉमन. It will be common, like database कौन सा है, like consider MySQL. तो MySQL का driver, username, password, port number, okay, auto commit operation is true or false, and that ये जितनी भी facilities है वो सब common होगी. So हम लोग एक अलग सा configuration file create करेंगे, अदरवाइज configuration files create करेंगे, more than one files create करेंगे, and we will put we will store all this in a same folder or in a single folder. So what is that college? That college is actually a project. एंड ये सब क्या हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया. ओके, तो ये एप्लीकेशन हो गया. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इन द सेंस इट्स अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस प्लस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. ओके, एन एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन. सो दैट्स दैट. सो नाउ लाइक इस फाइल के अंदर सब कुछ हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. So like we have to install the Python firstly to install the Django, and after that you have to just fire this command like pip install Django. Okay, there is a mistake. Okay, now if Django is successfully installed, like right now it's installed, तो मुझे तो यहाँ वर्जन पता चल ही रहा है, it is 3.1.3. It is 3.1.3. So now Django is installed. So what you have to do? Firstly, what we have to do, guys? Firstly, we have to create a project. Firstly, we have to create a project, and after the project, we have to create an application. So to create a project, firstly, you have to आपको एक folder बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप अपना project create करना है. So मैं desktop पे एक folder बना देता हूँ, like Django projects. Django projects, और इसको साइड में रख दो. That's a Django projects. Okay, that's my folder. Now इस folder के अंदर मुझे actually Django project बनाना है. मैं repeat कर रहा हूँ. जो हमारे यहाँ पे actually college नाम का जो project है, जो college नाम का project है, I want to create this project. Okay, I want to develop this project. But where you will store this project? तो उसके लिए मैंने पहले से एक folder बनाया. Otherwise, let me just change the name my Django. Otherwise, my Django. Okay, now let me move to this particular location. So ये डेस्कटॉप पे था my Django. So like हम लोग पहले उस लोकेशन पे पहुंचे.
Now guys, you have to fire a command that is django admin, and after that make, otherwise make, यहाँ पे हमारे पास अभी, sorry, not to make, actually create it or create project, ऐसे दो command है, but like consider I just forget that command, so just write down django admin and press enter. Okay, django admin and just press enter. मैंने सिर्फ क्या लिखा, django admin. So we have lots of commands which are actually applicable, otherwise which we can fire with this django admin. So write down the command name is start project actually. Okay, the command name is start project. So what I have to write down, django admin start project, and whatever the project, let I just say college. Okay, otherwise it's my first project, so let I just say it's a first project. Okay, so what we write down, django admin, django-admin, then actually start project and first project. So now what it will do, let me check our folder. So in this is inside this folder actually first project folder was created. मैं repeat कर देता हूँ, सबसे पहले हमने Python install किया. After the installation of the Python, what we did, Python के बाद guys हम लोगों ने क्या किया था? Our next task is हम लोगों ने Django install किया. Okay, after that हम लोगों ने Django install किया. After the Django, what is our next task? हम लोगों ने एक folder create किया था, and वो फोल्डर क्रिएट करने के बाद उस लोकेशन पे नेविगेट किया. लोकेशन पे नेविगेट करने के बाद हम लोगों ने लाइक एक कमांड फायर किया, एंड दैट कमांड इज नथिंग बट a django admin start application and your project name. So it will just create an application. Okay, so it will create a project. Now inside that, like it's my first project, inside the first project, once again the first project is a folder. So why this folder is there? Because it will have all the configuration files. Okay, it will have all the configuration files. Okay, so now inside that we have 5 files. So just ignore this __ init, it's not useful. So right now we require only 2 files, settings and URLs. Okay, this it will have actually all the configurations. So we'll discuss these files in this session. So what we discussed up to this, project means what? Project means it's a group of applications and configuration file. So whenever guys you will create a project, जैसे मैंने यहाँ पे एक project के लिए application एक query fire किया, django admin start project and first project. So first project is my project name. First project is my project name. So whenever you will fire this query, what will happen? One folder will be created with the given project name, and inside that like one folder is there with the same name. Inside that all the settings files will be there, all the configurations files will be there. Okay, now what we have to do, now we have to just move to that particular folder. क्यों इस folder के अंदर जा रहे हैं? Because that is my project. Okay, now I want to create some applications. Like अब मुझे कुछ applications बनाने, like I want to create account application, I want to create admin application, I want to create student application, like that. So right now I will just create actually quiz application. Okay, throughout the like tutorial हम लोग actually quiz application develop करेंगे, website create करेंगे quiz के लिए. So once again guys, now you have to fire the query manage.py. Now consider, मैं इसके साथ भी command भूल गया, press enter. So जितने भी command उसके साथ fire हो सकते हैं वो सबके सब उसमें return करती है. So आपको application बनाना, you have to just use this command start app. क्या लिखना था मुझे? manage py start app. Now just write down your application name. So I want to create a quiz app. Okay, I want to create a quiz app. That's that. Okay, so let me check our folder कि क्या हुआ. So now one folder is created, that is quiz app. Now inside that some files and one folder is there. Okay, by default Python बना रहा है, so django create कर रहा है. You don't have to worry about all this thing. Okay, so last session में हम लोगों ने I think यहाँ तक complete किया था how to install the django. So that we have command that is pip install django. Then how to create a project. So for that we have one. So that is django admin start project, and here you have to just write down a project name. Okay, now whenever you will create this project name, whenever you will just fire this project, whenever you will fire this command, what will happen? One folder will be created. Okay, एक folder create हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा होगा एक folder create हो जाएगा. तो उसके अंदर एक manage.py नाम का file होगा and one folder with the same name and with some settings files. Okay, so now another thing is like if you want to create actually not this one, yeah, here it is.
If you want to create an application inside your project, and you have to decide on manage.py, start app, and your application name. So it will create one more folder inside that first project or project folder name. Now your application name, and inside that we will have, okay, now isko main aage le leta hu. Okay, inside that, okay, like init.py, admin.py, apps.py, model, stats, and you, and one folder is that is migration. So that's that. यहाँ तक सब कुछ complete है. Now if everything is fine, then I want to check like अगर मैं इस application को run करूँ, then my server is working or not. So for that, one more thing is there, that is manage.py run server. Ensure right now अब जितने भी command fire करेंगे वो सब manage.py के साथ करेंगे. So guys, this is the server location. In short, अगर आप अपनी website launch करना चाहते हो या website access करना चाहते हो, so आप जैसे हम लोग लिखते हैं generally localhost/phpMyAdmin. So here you have to write down localhost and :8000. In short, 8000 भी actually server launch हुआ है. So you have to write down localhost and :8000. So it will just start the Django. More even, you can just write down 127.0.0.1 :/::8000. Okay, जैसे उन्होंने बताया था. You can use either of the thing. Okay, आप ऐसा भी लिख सकते हो 127.0.0.1 :8000. It also represents a local host actually. So दोनों का मतलब local host ही होता है. Okay, so right now it has some bug. So हम लोग को सिर्फ यहाँ close पे click करना है. So it will just show the Django like home page it just display. Okay, कौन सा वर्जन है वो सब यहाँ से पता चल जाएगा. Okay, दोनों सेम ही वेबसाइट है. ठीक है, तो लोकल होस्ट लिखिए, otherwise 127.0.01, both having the same meaning. So that's that. My server is working right now, but if someone says, sir, I do not want to launch a server on actually 8000 port. I do not want to launch a server on 8000 port. So guys, you have to just write on manage.py run server and whatever the port number you want to specify. Okay, so मैंने यहाँ पे लिखा manage.py, then run server, then 8000. Sorry, not 8000, actually 8080. 8080 it actually engaged with someone. Okay, वो कहीं पे engaged है. By mistake 808 is there. Okay, by mistake actually वहाँ पे 808 मेरे से zero actually remove होके enter लग गया था. So now it's works fine. अब देखो वो कौन सी जगह पे launch हुआ, 127.0.01 808. So now if you want to access the server, जैसे मैं इसको refresh करूँगा तो automatically यहाँ पे close हो जाएगा कि यहाँ पे server ही नहीं. So you have to write down 127.0.0.1 and 808. So is it clear? So how to run the server? So ये सब complete कर चुके थे. Okay, so how to run the server? You have to simply write down manage.py run server, and if you want to change the port number, then you can just specify manage.py run server and 808. That's that. So finally, up to this, the task is done. Now यहाँ तक पहुंचे थे. Now the next task is, now what is my first requirement? Like, what is your application name? So application name is QuizApp. Application name is actually a QuizApp. So अगर guys किसी ने application को access करने की try, तो मैं browser open कर रहा हूँ and let I just write down here. इस location पे actually QuizApp नाम की कोई चीज है. Okay, so I want to just open the home page of that QuizApp. So मैंने क्या लिखा? Whatever the location of my server. So that is actually 127.0.01, and after the port number, after that the port number, and after that मैंने यहाँ पे QuizApp लिखा. So what is the meaning of that QuizApp? I want to access that application. Okay, मुझे वो application access करना है. मतलब एक सर्वर पे एक्चुअली बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, एक सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो मुझे इस एप्लीकेशन पे वर्क करना. नाउ इट्स नॉट रिप्लाइंग मी. ओके, वो वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअली प्रोसेस हो रही है बट आंसर नहीं मिल रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा करना था कि अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, देन आई वांट टू क्रिएट अ होम पेज. मुझे एक्चुअली होम पेज उसके लिए क्रिएट करना. सो गाइस, यू हैव नॉट टू वरी अबाउट द HTML, CSS एंड एटसेट्रा थिंग if you are working with the Django. Yes, अगर आपको और थोड़ा अच्छा करना हो, then you can just go with all this thing. But basically अगर आपको normal Python code से response generate, Python code से ही अगर आपको response generate करना है, then you have not to worry about HTML and etc. things. What you have to do, just open the QuizApp. In short, whatever the application name is there, just open that. Open the views.py. Okay, उसके अंदर एक view नाम का एक पूरा file है. Okay, just open that thing. Views.py. Just right click on that and open in either of the editor. मैं उसको actually Notepad++ में open. So actually view मतलब जो view generate करता है. View in the sense जो view generate करेगा. Okay, and just define the function here. Okay, define function. Like a function का नाम कुछ भी रख सकते. You can write down anything. Okay,
जैसे आप फंक्शन का नाम रख दीजिए ABCD और वट, अब जो भी रखना चाहते हो यू कैन जस्ट सेट। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, yeah, here it is. What you have to do, you have to simply open your application, and inside that use.py. Now just push paste this thing inside that your inside that function. ओके, जो जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम है इंडेक्स, यहाँ पे फंक्शन का नाम है इंडेक्स, और यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स। सो हाउ टू क्रिएट a function in Python, how to create a function in Python. So for that you have to just write down the keyword, and then you have to just specify the function name. So let's just specify the function name, that is request, that is index. Now guys, whenever this function will be invoked by the Django, अब Django देखो, जब भी आप सर्वर पे रिक्वेस्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउजर से रिक्वेस्ट प्लेस किया, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा 127.0.0.1 808 in Quizlet. Then this request will be forwarded to the actually Django framework. Okay, now Django framework will check, is there any Quizlet inside our Django framework? मतलब कोई Quizlet नाम की कोई चीज है? If it is there, then कौन से पेज के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है? उसमें से कौन से पेज के लिए रिक्वेस्ट किया? student.py और लाइक स्टूडेंट पेज के लिए किया हुआ है, एडमिन पेज के लिए किया हुआ है, लाइक कोई परचेस के लिए किया हुआ है, कार्ड्स के लिए किया हुआ है, ओके, पेमेंट गेटवे के लिए किया हुआ है, कौन सी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया? सो Django एक्चुअली will access that particular file and return to the client. मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट ने जैसे रिक्वेस्ट प्लेस किया, that request will be actually forwarded to the Django framework. Now what Django framework will do, Django framework actually पहले चेक एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट आया था, जिस एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट आया था वो एप्लीकेशन हमारे पास है या नहीं। अगर वो एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल्ड है, आफ्टर दैट उस एप्लीकेशन पेज के लिए रिक्वेस्ट आया, so it will find that particular page, will execute that particular page and will return that page to the client. Okay, but for that particular app, like first of all मान लो उसने एप्लीकेशन सर्च किया, उसको एप्लीकेशन मिल गया। नाउ जो पेज फाइंड आउट किया, इन शॉर्ट जो यूआरएल के साथ जो पेज फाइंड आउट हुआ, उसके साथ गाइस एक्चुअली कोई ना कोई फंक्शन मैप्ड होगा, then what my Django will do, call that particular function, it will call that particular function and pass a request object as an argument, so अब अगर कोई फंक्शन को Django की यूआरएल के साथ मैप करना चाहते हो, उसको और डिटेल में समझेंगे। अगर आप कोई फंक्शन को Django के यूआरएल के साथ मैप करना चाहते हो, यूआरएल इन द सेंस आई मीन टू से कि यहाँ पे किसी ने बोला हो कि सर मुझे इंडेक्स से एक्चुअली क्विज़लेट में से मुझे एक्चुअली इंडेक्स नाम का कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, ओके, इंडेक्स नाम का कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो ये पूरा का पूरा यूआरएल होगा। तो इस यूआरएल के साथ अगर आप इस फंक्शन को मैप करना चाहते हो, then what you have to be careful, what you have to take a care guys, जब Django मैपिंग करेगा तब वो फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट आर्गुमेंट में पास करेगा, so you must create a variable, you must create a parameter to hold that particular passed data. ओके, Django आपको कुछ ना कुछ डेटा पास करके देगा, आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आर्गुमेंट अगर आपने यहाँ पे होल्ड नहीं किया, पैरामीटर अगर आपने यहाँ पे सेट नहीं किया, then what will happen actually, mismatch argument type mismatch actually error generate हो जाएगा। तो like Django actually function call कर रहा है with single argument and you define a function without argument, so it makes an issue. Okay, so that's that. Now जब function call किया, just consider हम लोग actually like जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। So what we discussed actually, हम लोगों ने ऐसा समझा था कि this is the client and this is my actual quiz application. Now in between that the Django is there. Okay, this is client, this is actually quiz application. Now in between that there is, so now what is the requirement? Client just make a request, तो client की request पहले कहाँ पे जाने वाली है? But obvious Django के पास। Django उसके लिए particular function हमारे quiz application में से कॉल करेगा। Now what is my Django's requirement? Django actually will ask for the response. Django will ask for the response. उसको actually response चाहिए, because Django को अभी आगे response किसको देना है? Sir Django को आगे response देना है actually client को। So Django ऐसा बोलेगा, भाई मैं अगर तेरा function call करता हूँ ना, then please return something, जो मैं आगे उसको दे पाऊँ, मुझे कुछ तो रिटर्न करके दे तो जो मैं आगे उसको दे पाऊँ। ओके, सो अब जिस फंक्शन को आप मैप कर रहे हो Django की रिक्वेस्ट के साथ, उसमें से कंपलसरी कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। बट नाउ गाइस, यू कैन नॉट राइट डाउन हेलो एक्चुअली। ओके, आप डायरेक्टली हेलो नहीं लिख सकते। व्हाई वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट डाउन हेलो?
बिकॉज गाइज ये आपका जो क्लाइंट है ना, दैट इज एक्चुअली ब्राउजर. आपका जो क्लाइंट है, इट्स अ ब्राउजर. ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, दैट इज HTML. Browser can understand only single thing, that is actually HTML. So it requires the HTML. Now Django will not convert your response in HTML. Django will not convert your response in HTML. So what we have to return? We have to actually return the object of HTTP response. We have to actually return the object of HTTP response. So let's just copy this and let me paste it here. मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए बोला गाइस कि अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो मैं ऐसे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, like h equal to HTTP response in the bracket, whatever the response you want to, like whatever the data you want to pass in that response. So it just create an object. Now just return that particular object. Okay. That's up to you. आप डायरेक्टली रिटर्न करना चाहे तो then it is okay. आप डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न लिख दीजिए, then it is okay. And if you want to create the data, if you want to store the data in an object and want to return the object, then it's also okay. Okay, so what we did, मैं पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ. What we did, हम लोगों ने सबसे पहला कामकाज क्या किया, हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर गए, that is a quiz app. Inside the quiz app, I have a views.py file. Okay, I have a views.py file. Now just open the views.py file. Just right click on that and just to select either of the editor. Now what you have to do inside that quiz.py, हम लोग को इसके अंदर क्या करना है guys? So inside that quiz.py, we have to actually we have to just define the function which will be mapped with the actually Django request. Okay, so यहाँ पे मैं function का नाम लिख रहा हूँ index. You can just write down anything. Okay, but अगर आप उसके request के साथ map करना चाहते हो, then it must have a request object as an argument. Django की request मतलब Django की URL के साथ अगर आप इस function को map करना चाहते हो, yes, नाम कुछ भी रख सकते हो, it doesn't matter. आप A लिखो, it doesn't matter. आप B लिखो, it doesn't matter. But better is request. Okay, so मैंने object argument में use कर दिया. Now another thing is like you have to return something. So मुझे return क्या करना है? HTTP response. I have in the bracket you can just write down. Okay, in the bracket you can just write down anything. That's it. Now guys, one more thing is there. I hope यहाँ तक clear है. Okay, मैंने कुछ response return किया, यहाँ तक clear है. Guys, 1 minute. Okay guys, okay, so guys, actually now the thing is we have to just import a package for this HTTP response. So this is the package. Okay, ये सब कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाओगे. So from Django HTTP import this HTTP response. That's it. So now that is the thing. Now how it works. Actually guys, देखो जब आप एक दो एप्लीकेशन Django में बना लोगे, after that you will be used to. Okay, उसके बाद used to हो जाओगे कि कैसे वर्क करता है. So now what is my next requirement? Like now how Django works. Man consider कि client ने यहाँ से request place किया. So request Django के पास गया. Request in the sense, let I just say कि यहाँ पे client ने लिखा था localhost colon 8000 and then quiz application and उसने लिखा था quiz app and let I just say उसने लिखा था index. मतलब ऐसा कुछ client ने यहाँ पे लिख के दिया था. So now ये request पहले गई Django के पास. Django understand that Django के पास जाने का मतलब ये एड्रेस का हो गया. ओके, ये काम काज हो गया. इन शॉर्ट localhost colon 8000 एक्चुअली वो Django का लोकेशन है कि Django कौन से सिस्टम पे कौन से पोर्ट पे एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, दैट्स दैट. नाउ क्विज एप मतलब वो क्विज एप नाम का एक एक्चुअली पर्टिकुलर एप्लीकेशन होना चाहिए Django के पास. नाउ इनसाइड दैट एक्चुअली मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है. इंडेक्स इन द सेंस व्हाट, दैट इज अ URL. सो गाइस, अब ये URL को अब देखिए मेरे पास क्विज एप में एक्चुअली एक फंक्शन था. ओके, views.py नाम की फाइल में मेरे पास एक फंक्शन था, दैट इज नथिंग बट एन इंडेक्स with request as an argument and some data is there, some code is there. 1 minute. मान लो यहाँ पे कुछ कोड है, स्लैश को इग्नोर करिए. ओके, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नाउ कंसीडर जैसे यहाँ पे अभी इंडेक्स वाला जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आया था. नाउ कंसीडर ऐसे इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3. मेरे पास 3 रिक्वेस्ट है.
index 1, index 2, index 3. I have 3 different requests, and I have 3 different functions over inside that views.py. Then how Django know कि भाई ये index 1 को मुझे मतलब ये index को actually इसी index नाम के function के साथ execute करना है, index 1 को index 1 के साथ करना है, index 2 को index 2 के साथ करना है. How do Django know this mapping? तो Django को कैसे पता चलेगा? Then what Django will do, it will actually move to the urls.py file. Okay, वो पहले urls.py फाइल के अंदर जाता है. urls.py में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? We have to just provide the mapping of URL and function. मैं रिपीट कर रहा हूँ how Django works. So सबसे पहली चीज like जब क्लाइंट का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, after accepting the client request, what Django will do? उसका सिंपल सा टास्क क्या होगा? It will check that particular application is installed or not. तो ये हम लोग को सबसे पहले Django को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. This is my application name. Okay, will check application is installed or not. तो ये तो पहले एक स्टेप करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करता है, वो कहाँ चेक करता है, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा. Now another thing it will do. The first thing is after accepting. Okay, sorry. After accepting the client request, Django will check that particular application installed or not. After that, consider उसको वहाँ पे true return हुआ, oh that application is installed. Then what Django will do? The next task of the Django is it will find the method name. It will find the mapping for URL passed. Okay. तो उसको जो URL हमने पास किया हुआ है उसके लिए वो मैपिंग फाइंड आउट करेगा. Okay, so mapping in the sense what? उसके साथ एक particular function, एक view part होना चाहिए. So वो चीज वो particular find करेगा. Okay, अब कहाँ चेक करने वाला है? In urls.py. In urls.py. So where this urls.py is? ये कहाँ पे? So guys, first of all, it will just check inside this actually. देखिए ये जो configuration नाम का configuration files जिस folder में था. So my project name is the first project. My project name is the first project. Inside that, once again, I have a first project having some configuration files. Just open that. Here we have urls.py. Okay, so inside that it will try to search something. So इसको पहले open करते हैं. Oh, it has actually a list. एक list बनाया हुआ है. List in the sense what? अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक list create करना है तो आप कैसे करोगे? LST is equals to something. So it's an array. It's an array. Okay, nothing else. Like मैं इसमें लिखूँ, oh, it's A, it's B, it's C. I have third member that is C 45 something like this. तो मैं कुछ भी अंदर pass कर सकता हूँ. Even I can pass actually like object also I can create. So it's an array only. Okay, it's an array, but it supports heterogeneous type of data. So here I have an array in that urls.py. I have an array. The array name is actually URL patterns. Array name is actually URL patterns. You can just check this thing. Okay, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो आपको पता चलेगा. It's inside the square bracket. That means what? This is nothing but a type of list. But inside that list, what we have? Inside that list, what we have? So we have actually a path object. So how to create an object in Python? So generally हम Python में कैसे object बनाते थे guys? हम लोग के पास मान लो एक employee नाम का class है, and if someone says sir please create an object with this employee. So generally हम लोग कैसे लिखते थे? Like E equal to employee. E is equals to employee. But now if someone says sir I want to create 3 employees and I want to store all these employees in a list of employees. So what I have to write down? मुझे कुछ ऐसा लिखना E1, E2, E3. So LST is equals to E1, E2, E3. But more proper way is इसकी जगह मैं ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा. Like square bracket and employee and employee. So what it creates, it also both having the same meaning. तो ये एक ही लाइन में complete हो गया. Here I just write down 4 lines. And दूसरी चीज ये तीनों employee को actually मैं E1, E2, E3 तीन अलग variable में store कर चुका. So it's a like कंप्यूटर को एक्चुअली 4 लाइन कंपाइल करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा एंड 3 वेरिएबल और होल्ड करना पड़ेगा. बट दिस इज द एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड वे. सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्रिएट अ लिस्ट विद 3 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स. बट नाउ कंसीडर इस एम्प्लॉय के अंदर कंस्ट्रक्टर में कुछ आर्गुमेंट हुई तो लाइक आर्गुमेंट्स, तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स हुआ तो आप ये आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो. इट डजंट मैटर. लाइक वो आपको एक्चुअली क्लास के अंदर देखना पड़ेगा. उसको आर्गुमेंट को मैनेज करने के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन शॉर्ट इनिट मेथड विद सम आर्गुमेंट आपको लिखना पड़ेगा. ओके, तो ऐसा मैंने कुछ पास किया. और इसको एक्सेस करना है तो फिर कैसे करेंगे? सॉरी मतलब फर्स्ट ए सर इट्स एन एलएसटी ना, लिस्ट है. लिस्ट में लूप चला सकता है ना. फॉर आई इन एलएसटी 1 तो तुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता जाएगा. ओके, हां
सिंपल है ना. नाउ आई मींस व्हाट, इट्स अ फर्स्ट टाइम. हाँ सर हाँ. ठीक है. ओके. सो गाइज अगर मैंने ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टर भी यूज किया, मतलब ऐसा कुछ डेवलप किया, देन आई कैन जस्ट पास द डेटा आल्सो. So just check this thing. What we have, actually we have a predefined class that is path. We have a predefined path. We have a predefined class that is path, and it is from Django's URL. Okay, so we have not to worry about this class. It is already declared. It is already defined. It's a library class, and it has actually two parameters. The first one is in name, so that is actually URL. That is actually URL. और उसको किसके साथ मैप करना चाहते हो? So right now we just write down a path actually. ओके. आप डायरेक्टली अपने व्यू का नाम भी रख सकते हो. व्यू इन द सेंस व्हाट, इन दिस views.py आई हैव इंडेक्स फंक्शन. सब डायरेक्ट फंक्शन का नाम भी लिख सकते हो, लाइक views.index. ओके, views.index. एंड अदरवाइज यू कैन जस्ट, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे यूआरएल है, लाइक अगर मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूं, देन आई विल हैव एक्चुअली 500-700 यूआरएल्स. ओके, अदरवाइज एटलीस्ट 70 to 80 यूआरएल्स आई विल हैव. ओके, स्मॉल प्रोजेक्ट है तो भी इतने यूआरएल्स तो बनने ही बनने. तो अगर इतने सारे यूआरएल्स मेरे पास है, और एक्चुअली मैं एक एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा, कंसीडर आई हैव एक्चुअली मोर देन वन एप्लीकेशंस. ओके, इन ए प्रोजेक्ट आई हैव एक्चुअली मोर देन वन एप्लीकेशन. तो हर एक एप्लीकेशन के एक्चुअली मैं 10-10 यूआरएल भी मान लूं, देन इन दिस आई विल हैव 40 यूआरएल्स. मेरे पास 40 यूआरएल हो जाएंगे. ओके, सो 40 यूआरएल्स एक्चुअली urls.py में लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. मान लो मैं ऐसे फैकल्टी के अंदर ऐसा बोलूं, ओके इसका एक यूआरएल है लॉगिन, स्टूडेंट के अंदर भी यूआरएल है लॉगिन, और अकाउंटेंट के अंदर भी यूआरएल है लॉगिन, एडमिन के अंदर भी यूआरएल है लॉगिन. सो ये सब के सब यूआरएल मुझे कहां पे डिक्लेयर करना है? सर Django कैसे काम करेगा पहले वो बताइए. तो Django के पास जब भी रिक्वेस्ट आएगी, it will find a mapping for that particular request in a urls.py. बट ये urls.py कहां पे? सर प्रोजेक्ट नेम, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इनसाइड दैट urls.py वहां चेक करेगा. सो हमने ये urls.py कहां से ओपन किया था गाइस? दिस इज माय प्रोजेक्ट. ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट था. Inside that, once again, a project name folder is there, that is first project. Inside that, urls.py. तो यहाँ सर्च करने जाएगा. Okay, and it will check all this thing from this url patterns list. और तो सब कुछ इसके अंदर सर्च करने जाएगा. तो फिर कितने कितने URLs है? Now just check, मेरे पास एक्चुअली अभी 4 URL के नाम सेम है, लॉगिन 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 लॉगिन. So it makes an issue कि भाई लॉगिन लिखने पे कहाँ जाऊँ? तो मुझे और स्पेसिफाई करना पड़ेगा. मेरा URL कुछ ऐसा होना चाहिए, फैकल्टी लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन. सो इट मेक्स अ प्रॉब्लम. सर ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. अदरवाइज मान लो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, लेट मी जस्ट से कि हम लोग कुछ उसको मैनेज कर लेंगे, कैसे भी इसको मैनेज कर लेंगे. ओके, तो मान लो मेरे पास बहुत सारे यूआरएल्स आ रहे हैं, बहुत सारे यूआरएल्स आ रहे हैं. सो दिस वन विल बी बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो व्हाट आई विल डू, द नेक्स्ट ऑप्शन इज वी कैन डू वन थिंग. आप ये जो यूआरएल्स वाला जो कंटेंट है, मतलब जैसे फैकल्टी के अंदर काफी सारे यूआरएल्स है, स्टूडेंट के अंदर काफी सारे यूआरएल्स है, अकाउंटेंट के अंदर काफी सारे यूआरएल्स है, एडमिन के अंदर काफी सारे यूआरएल्स है. तो हर एक के अंदर एक urls.py अलग से बना दीजिए. हर एक फोल्डर में, मतलब हर एक एप्लीकेशन में अलग से एक फाइल क्रिएट करिए जिसके अंदर वो एप्लीकेशन के ही यूआरएल होंगे, जिसके अंदर वो एप्लीकेशन के यूआरएल होंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस फाइल को बस urls.py के अंदर लिंक कर देना है. जब भी बाय फैकल्टी के लिए कोई यूआरएल का रिक्वेस्ट आए तो Django तो यहीं पे चेक करेगा. तो व्हाट वी विल डू, जैसे देखिए इसने एडमिन को मैनेज किया हुआ, एडमिन को इस फाइल के साथ मैनेज किया हुआ. इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे एडमिन करके रिक्वेस्ट फायर करेंगे, नॉट दिस वन, प्रोजेक्ट नेम इज एक्चुअली फर्स्ट प्रोजेक्ट और फर्स्ट ऐप. या दैट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड एडमिन. अगर मैंने ऐसे फायर किया, देन ओके, बहुत टाइम ले रहा है. 1 मिनट. मैंने कंट्रोल सी दिया, इसको फोर्सफुली टर्मिनेट किया हुआ. ठीक है. ओके, नाउ इट्स वर्क्स फाइन. ओके, सो नाउ फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखिए, अब जैसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा, उसने कहां पे गया? उसने बोला सर मेरे पास एक ही यूआरएल, दैट इज एडमिन, राइट? बिकॉज हमने यहाँ पे एडमिन लिखा. ओके, सो बाय डिफॉल्ट इट वाज देयर. सो आपको सिर्फ यहाँ पे अब क्या लिखना है? एडमिन. ओके, नाउ why it's not working? So now here we have an admin page. So by default ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद से प्रोवाइड करके देता है, हम लोग को ये बनाने की जरूरत नहीं है. जैसे आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट काफी सारी चीजें अपने को प्री डिफाइंड मिल रही है. So here you have to, and validation. Okay, so you have to worry about validation. जब पासवर्ड नहीं है तो कुछ बग देगा कि नहीं देगा. So just check, please fill out this field and etc. Like I just write down something, and so validation is also there.
ओके, एंड डेटाबेस के साथ मैपिंग करके आपको लॉगिन भी करा देगा. इन शॉर्ट एवरीथिंग इट विल जस्ट हैंडल. सो ये यूआरएल पैटर्न्स का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि जैसे रिक्वेस्ट आएगी व्हाट विल हैपन, वो पर्टिकुलर डीजेंगो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके कहां पे जाएगा, डीजेंगो उस रिक्वेस्ट को सर्च करेगा, आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या था सर प्रोजेक्ट का नाम था लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो उस प्रोजेक्ट के जहां जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से उसको सर्च करने की ट्राई करेगा. दैट्स दैट. Okay, but now what is the problem? Now consider if I have 4 to 5 applications in my project, then maybe there are lots of URLs. Then guys, हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप हर एक एप्लीकेशन के अंदर खुद की urls.py नाम की फाइल बना दीजिए और आप उसको यहाँ पे लाइक कनेक्ट कर दीजिए. So आप दो तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. First thing is you can create a file and configure that file. Otherwise, you can directly write down a hard-coded URL. So choice is yours. Okay, choice is yours. Now what is my next requirement? So ये फंक्शन हम बना चुके. मैं इस फाइल को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज ये फाइल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा सेशन के बाद, तो आपको क्लियरली पता चले कि हमको कैसे बनता है. सो नाउ माय फर्स्ट रिस्पॉन्स इज डन. रिस्पॉन्स मतलब अभी हमने इसको रन नहीं किया. ओके, हमने इसको किया बट मैंने सिर्फ मेरा पहला रिस्पॉन्स लिखा कि अगर किसी ने इंडेक्स को एक्सेस करने की ट्राई की देन एक्चुअली हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए. बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली इस फंक्शन पे तो डायरेक्टली डीजेंगो जाने ही नहीं वाला. वो कहां पे पहुंचेगा सर? डीजेंगो एक्चुअली सर्च करेगा, पहले तो सर्च करेगा आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कि नहीं. इट विल सर्च योर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड और नॉट, एंड आफ्टर दैट इट विल फाइंड दैट पर्टिकुलर, अगर मान लो इंस्टॉल्ड है आपका एप्लीकेशन, आफ्टर दैट इट विल चेक अ मैपिंग फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड यूआरएल इन एक्चुअली urls.py. सो मुझे पहले दो टास्क करना. पहले मुझे डीजेंगो को बोलना है दिस इज द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन. ओके, ये मैंने खुद ने एप्लीकेशन बनाया. सो एक्चुअली यहाँ पे डीजेंगो में सबके सब एप्लीकेशन प्लगेबल है. प्लगेबल इन द सेंस if you want to remove the application then you can, if you want to install the application then you can. Okay, मतलब plugin मतलब आपके पास application defined है but you want to just remove that, then you have not to delete the whole application from there. You have to just comment a single line of code, automatically it will be plugged out. Okay, और अगर आपको once again plugin करनी है, just write down a single line of code, it will be attached with your project. Okay, so एक लाइन का कोड हमको लिखना है. So that's that. So we have to just perform these two tasks. Okay, so this is my first response. Sorry, where is it? Yeah, here it is. So what we did, हमने एक function define किया with request as an argument, and वहां से हमने कुछ HTTP response return करवाया with hello world as a message. So now after that, ये जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो एक्चुअली यूआरएल में चेक करेगा. ये जितनी भी मैं आपको कहानी कर चुका, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to just अब हम लोग को क्या करना होगा, we have to actually configure this function, otherwise we have to just create a urls.py for this application. हम लोग के पास दो ऑप्शन थे, या तो आप इस फंक्शन को हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख सकते हो, इस फंक्शन को 1 मिनट ये पड़ेगा. अब इस फंक्शन को डायरेक्टली हार्ड कोडेड यहाँ पे रख सकते हो. मतलब कैसे लिखना है मुझे, लाइक लेट आई जस्ट राइट डाउन पाथ और इसका यूआरएल मान लो मैं लिख देता हूँ एबीसीडी. मतलब कोई एबीसीडी लिख के रिक्वेस्ट करे, so मेरा ये फंक्शन रन होना चाहिए. व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? सर इंडेक्स. बट इंडेक्स नाम का फंक्शन कौन से पाइथन फाइल में है? सर इट इज इनसाइड द views.py. सो जस्ट राइट डाउन views.py. बट ये views नाम की फाइल है कहाँ पे भाई? views नाम, सर इट इज इनसाइड द क्विज ऐप. सो इट इज इनसाइड द क्विज ऐप. सो फ्रॉम क्विज ऐप import views. Okay, so मैंने views को import किया. Now we can simply write down views.index. So that is hard coded. Okay, that is hard coded. Now what we have to do, we have to just write down over here like 127.0.1 808, मतलब जो भी आपका पोर्ट नंबर आपने वहां पे सेट किया हुआ है. Now you can just write down ABCD. Okay, so it will just call that function. Still we have a problem because मैंने अपनी application installed नहीं की. Okay, here also it throws some error, and that error is, sir what is quiz app? I do not know what is quiz app. मैं quiz app को ही नहीं जानता. Okay, मैं quiz app को ही नहीं जानता. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले वो एप्लीकेशन सर्च करेगा, सो एप्लीकेशन इज नॉट येट इंस्टॉल्ड. ओके, स्टिल इट्स नॉट इंस्टॉल्ड. सो दैट्स दैट. सो हम लोग कहां पहुंच गए थे? सो फाइनली यहाँ पे एक चीज ऐसे लिख सकते हैं यूआरएल्स के अंदर, दैट इज द फर्स्ट थिंग. और अगर मान लो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो, देन गाइस डीजेंगो एक और चीज देखता है, and that is this settings.py. जैसे आपको मैंने बताया था कि ये दो फाइल हम लोग को चेक करनी है, settings.py and urls.py.
just open that settings.py file, and in that installed app list just write down Quizap, just write down Quizap. ओके तो मैंने Quizap नाम का एक मतलब जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम मैंने जस्ट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक चीज फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल में लर्न करेंगे. एंड रिस्टार्ट योर सर्वर राइट नाउ. रिस्टार्ट योर सर्वर. स्टिल इट हैज अ प्रॉब्लम. फाइल सेव कर दिया था हमने. नो मॉड्यूल नेम फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट quizap. ओके फोल्डर का नाम चेक करना पड़ेगा. So okay, that's that. So now it's reloaded. Good, now it's reloaded. Now what is my next requirement? My next requirement is okay, now हम लोग को actually यहाँ से request place करना था. So let me just refresh this. 127.0.01 808 ABCD. Now what is that ABCD? ABCD एक्चुअली हमने यहाँ पे URL सेट किया तो उसके साथ ये फंक्शन रन होना चाहिए. It's taking a time. So one minute guys. ओके देखिए अभी मैंने इसको यहाँ से फोर्सफुली क्लोज किया सर्वर को. तो एक्चुअली मुझे बोल रहा है सर दो टाइप के रिक्वेस्ट है. इधर यू कैन जस्ट राइट ऑन एडमिन और यू कैन जस्ट राइट ऑन एबीसीडी. आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके बिकॉज अब मैंने वहां पे दूसरी चीज डिक्लेयर कर दी. सो लेट मी जस्ट राइट ऑन एबीसीडी. अदरवाइज लेट मी जस्ट राइट ऑन एडमिन. अब ये वर्क करना चाहिए. साइट नॉट रीचेबल मतलब यहाँ पे कुछ तो बग है. ओके सर्वर रन करने भूल गया था. सॉरी यहाँ पे एंटर नहीं किया था मैंने. So here we have hello world. Okay, and this is the admin page. अगर run करते हैं. So is it clear? So that's a hard code. आप ऐसे भी लिख सकते हो. But मैंने जैसे आपको बताया, if you have lots of URLs, then this is not a good practice. To specify the URL, then what we have to do, we have to create a urls.py in your application. Okay, so what's my application name? My application name is Quizap. So here we have to create a file. Let me just copy one file and paste it here. And मैं इसका नाम change कर देता हूँ urls.py. We have to create a file, and inside that we have to actually just note down okay, just remove all this. So it's a blank file. Now what you have to do, you have to specify all this thing inside that. Okay, और उस फाइल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना. So ये यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है सब कुछ. You have to just create one file that is actually urls.py, and inside that we require that URL patterns list and just mention .view.index. Just ignore this name. Okay, right now just ignore that. So एक path के लिए जो भी जो path नाम का मैंने एक class use किया, तो path के लिए जो भी supported import statement है, just import that. Okay, जो भी मुझे actually required module या package की जरूरत थी उसको आप import करिए. and views.index लिखे. Now what is that views.index? Index is my function name, and that function is actually defined inside this views.py file. Okay, just mention that. So in this way also you can actually declare your URL. Now what you have to do, अपनी एप्लीकेशन का जो URL नाम का फाइल है, अब मुझे इसको कहाँ पे मैप करना पड़ेगा. जो कॉन्फ़िगरेशन जो फोल्डर था मेरा उसके अंदर एक्चुअली urls.py था, उसके साथ उसको मैच करना पड़ेगा. So you have to just write down in that you have to just write down your application name slash and include your file name कि मुझे ये फाइल इंक्लूड करना है. ओके, ये प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट आई होप यहाँ तक